In this video, we will solve this question. This question was previously asked in 2024 CBSE exam. We will solve this question using properties of definite integral. Specifically speaking, we will use this property to solve this question. क्योंकि in our problem, जो भी limits है वो -a to a का form में. Therefore, we will use this property. But there are two results of this property. So whenever there is an integral and the limits are in the form -a to a, we tried to solve the problem using this property. So there are two results of this property, and if the function is odd function, then the result of this integral will be 0, and if the function is even function, the result will be in this form. So how do we check the function is odd function or even function? For that, we have to find f of minus x. If f of minus x is minus f of x, we say that the function f of x is odd function. And if f of minus x is f of x, then we say the function is even function. So whenever the function is odd function and integral in this form, then the result of the integral will be 0. And if the function is even function, that means f of minus x is f of x, then the result of the integral is 2 integration of 0 to a f of x dx. So first we need to check the function is odd function or even function. If odd function, directly 0 इसका आंसर होगा, and with the function is even function, इसका result होगा ये. So let's represent the function with f of x. So let's assume f of x is equals to root over 2 minus x by 2 plus x. And we have to find f of minus x. We have to find f of minus x. To find f of minus x, we will put minus x in place of x. So we will put minus x in place of x. So जहां पर भी x था उसकी जगह minus x put कर लिया, ठीक है? Now what is 2 minus of minus x? 2 minus of minus x is 2 plus x. So equal to root over 2 plus x divided by 2 plus of minus x is 2 minus x. So ये जो फंक्शन है ये ना ही f of x है एंड ना ही माइनस f of x है. Therefore ये जो फंक्शन है फिलहाल ये ना ही ऑड फंक्शन ना ही इवन फंक्शन है. So at this stage we cannot apply the property because ये ना ही ऑड फंक्शन है और ना ही ये इवन फंक्शन है. But we can simplify this function. इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. So what we will do, we will try to reduce this function and we will try to solve the integral using this property. So let me erase this part. So how do we reduce the function? So what we can do, ये जो फंक्शन है रूट ओवर 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकता 2 माइनस एक्स से. So let's multiply 2 minus x in the numerator and in the denominator. So the integral was integration of minus 2 to 2 root over 2 minus x by 2 plus x dx. So integral minus 2 to 2 root over 2 minus x by 2 plus x. Numerator and denominator multiply करना है 2 minus x से. So we are multiplying 2 minus x in the numerator and in the denominator. तो एक्चुअली हम रूट का अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रूट का अंदर मल्टीप्लाई करने पर आई कैन इजीली रिड्यूस द फंक्शन, क्योंकि दिस विल बिकम 2 minus x whole square and this will become 2 square minus x square. So this integral will become minus 2 to 2 root over 2 minus x square divided by, ये जो है डिनोमिनेटर जो है ये a plus b into a minus b का फॉर्म में. So a plus b into a minus b will be a square minus b square. Now 2 minus x का स्क्वायर ये रूट से बाहर आ जाएगा. So this will be minus 2 to 2 2 minus x divided by root over 2 square minus x square. क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये a square minus b square का फॉर्म में एंड ये a minus b होल स्क्वायर का फॉर्म में. सो देयरफॉर यहाँ पे स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है. ये रूट के अंदर एज इट इज रिमेनिंग रहेगा एंड 2 minus x का स्क्वायर विल बिकम 2 minus x. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सेपरेट दिस फंक्शन. ये फंक्शन को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा.
So I can rewrite this as minus 2 to 2, 2 by root over 2 square minus x square minus x by root over 2 square minus x square. इसको हम ऐसा लिख सकता. Now we will apply the integral on both these functions separately. So this will be integration of minus 2 to 2, 2 by root over 2 square minus x square dx minus integral minus 2 to 2 x by root over 2 square minus x square. Now again we will check whether the function is odd function or even function. So यहाँ पे दो इंटीग्रल है, ये पहला इंटीग्रल है, ये सेकंड इंटीग्रल है. दोनों इंटीग्रल के लिए we will check whether the function is odd function or even function. So let's represent this function with f of x and this function with g of x. So f of x is 2 by root over 2 square minus x square, and we will represent this function with g of x. So g of x is equals to x by root over 2 square minus x square. To check whether the function is odd function or even function, we will find f of minus x and g of minus x. So f of minus x, we need to find f of minus x. इसके लिए क्या करना है, x का जगह minus x put करना है. So this will be 2 by root over 2 square minus of minus x का square. And similarly यहाँ पर भी minus x put करना है. So this will be minus x divided by root over 2 square minus minus x का square. Now you can clearly see ये minus x का square है and minus x का square will become x square. Similarly यहाँ पर भी minus x का square will become x square. So equals to 2 by root over 2 square minus x square. And this will be minus x by root over 2 square minus x square. And इसको हम लिख सकता minus x by root over 2 square minus x square. And you can clearly see ये जो फंक्शन है क्या है, ये बेसिकली एग्जैक्टली सेम है इसका तरह. मतलब क्या है, ये f of x है. सो इसका जगह हम f of x पुट कर सकता. सो इक्वल टू f of x. सो आई गॉट f of minus x एज f of x. मेरे को मिला f of minus x इज इक्वल्स टू f of x. एंड यहां पर हम इसका जगह क्या पुट कर सकता, g of x पुट कर सकता, क्योंकि g of x इज x by root over 2 square minus 4 square. तो इसका जगह हम g of x पुट कर लेगा. सो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस g of x. So we got g of minus x is minus g of x. ठीक है. So मेरे को यह मिला कि f of x is a even function and g of x is a odd function. क्योंकि मेरे को मिला g of minus x is equals to minus g of x, therefore g of x is a odd function. And मेरे को मिला f of minus x is f of x, therefore f of x is a even function. So I got this function is a even function and this function is a odd function. Therefore इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा. क्योंकि whenever f of x is odd function, we say the integral is 0. And whenever we say f of x is a even function, the integral will be in this form. So ये मिला मेरे को odd function, therefore इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा. And इस इंटीग्रल को मेरे को लिखना पड़ेगा equals to integration of 2 into 0 to 2 2 by root over 2 square minus x square dx and minus 0, क्योंकि सेकंड जो इंटीग्रल था वो ऑड फंक्शन था, इसीलिए उसका जगह 0 आ गई है. अब इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 को बाहर निकाल सकता. सो दिस विल बिकम 4 into इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx by root over 2 square minus x square. Now we have to solve this integral and ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. To solve this integral, we will use this formula, and the formula is integration of dx by root over a square minus x square is sin inverse x by a and plus c. So यहाँ पे लिमिट्स है, मतलब ये क्या एक डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे c अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. So we will apply this property in this integral. So equals to 4 into sin inverse x by 2, लिमिट्स आर 0 to 2. यहाँ पे a क्या है, 2 है, इसीलिए हम हर जगह 2 स्क्वायर का फॉर्म में लिखा है. सो यू कैन सी हम हर जगह 2 स्क्वायर लिखा है. ठीक है. इसको हम 4 भी लिख सकता था, बट हम 2 स्क्वायर रखा है क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना था एट द एंड. एंड नाउ वी विल पुट लिमिट्स इन द फंक्शन. ठीक है. पहले अपर लिमिट पुट करना है, देन माइनस, देन लोअर लिमिट पुट करना है. सो इफ आई पुट अपर लिमिट, दिस विल बी, इफ यू पुट 2 in the function, this will be sin inverse 2 by 2, which is basically 1. Then minus
we have to put the lower limit, which is 0. So 0 by 2 will become 0. Okay? So we know sine inverse 1 is pi by 2. So 4 into pi by 2. And what is sine inverse 0? Sine inverse 0 is 0. So 4 into pi by 2 will be 2 pi. So integration of minus 2 to 2 root over 2 minus x by 2 plus x, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 2 pi. So ये है आंसर for the given integral. This is how you solve the given question. So as I said, this question was based on this property, this specific property, जिसमें अगर लिमिट माइनस a to a का फॉर्म में दिया हुआ है, then we have to check whether the function is odd function या फिर even function. But in our question जो फंक्शन दिया हुआ था वो ना ही ऑड फंक्शन था ना ही इवन फंक्शन था, इसीलिए वी हैड टू रिड्यूस द फंक्शन. रिड्यूस करने के बाद अगेन वी हैव चेक्ड वेदर द फंक्शन इज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन. चेक करने के बाद वी गॉट आवर रिजल्ट. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. So this is it for the video. We will solve more questions on our upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.